Hello, hi everyone. So we are back again with another live session, and hopefully, and fortunately, Krish is here after a long time. Welcome back Hi, Chris. How are you? with a Alive and kicking. with a glowing face. He's back again with all the alpha and news updates. And today, I think Shovik has some internet issues, so bear with us if you see some lag or the picture quality decreasing. So, just like every week, we are back again with another live session. And you all know, if you are watching us for some time, that we do this session where we talk about the latest alpha, whatever news we had for this week, and also some trading and investment updates, where the markets are heading, is it red और ग्रीन. तो चलिए इस वीक के लाइव सेशन को शुरू करते हैं हम लोग. और सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूज़ से, बिकॉज क्रिश इज हियर आफ्टर अ रियली रियली लॉन्ग टाइम फॉर ऑलमोस्ट 3 weeks. So we have been missing him, and whoever is watching this from whichever social platform, do make sure that you follow it and make sure that you comment all your questions that you have, and we are happy to answer. And with this, let's start with the news section. Over to you, Krish. Thanks, Sam. So I think आज का सबसे बड़ा न्यूज जो अभी तक है वो है कि A16Z एंडरसन हॉरोविट्ज ने 100 मिलियन इन्वेस्ट किया है आइगन लेयर को. तो जैसे बहुतों को पता है, आइगन लेयर is going to change how restaking and LRTs or liquid staking is operating. So this is a very bullish move from one of the top VCs investors in the crypto space, and hopefully this also increases EigenLayer's value. तो जो भी टोकन हंटर्स है जो एयर ड्रॉप्स के लिए हंट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज आल्सो अ साइन कि दिस इज टाइम फॉर देम टू गेट इन. और बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो आइगन लेयर को यूटिलाइज कर रहे हैं या यूटिलाइज करने वाले हैं. So this is an indication that RWAs, liquid staking are here to stay, and the big guns are out. So अभी तक ये investment क्यों नहीं हुआ था? I think it was mostly EigenLayer was waiting for a market to turn green, increase their TVL, increase their partnership so that they can raise at a higher valuation. I think that was the only stopping point, but this was in the making for a long time actually. So, Krish, are you hunting or staking something What in are the I think protocols, Chris? EigenLayer I'm quite points? interested to know. I think मैं तो कौन ऐसे कौन नहीं सा बोलता हूँ प्रोटोकॉल कि मैं क्या. हाँ बोलिए. कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज करने वाले हैं? आई If you थिंक have any idea. बहुत सारे अभी ऐसे लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आइगन लेयर के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं, एंड यू कैन गो एंड डिप्लॉय एज वेल. बट मैं कभी यूज नहीं करता हूँ क्योंकि आई फील कि अगर आप ईच खरीदे हो, लेट्स से $1,500, $1,600, $2,000, and you just hold it in a non-custodial MetaMask wallet, and each is going to be QXS, right? So let's say it's a 2x. So we are already at 50%. So if I stake it in a EigenLayer compatible layer 2 or any other DeFi protocol, they are giving me enhanced yield of, let's say, instead of 3-4% to, let's say, 8-10%. So for me, Right. that risk is not justified. So I am somebody who will just buy it and hold it or hodl it, and then कुछ देर बाद या कुछ महीनों बाद I will offload it. So I generally don't do liquid staking, although I do staking, normal staking, not liquid staking. But Sam does. So Sam, I think you have been hunting for some nice alphas to do liquid staking. So which are the protocols you are using on Eigen? Maybe you can name one or So two. there are a lot of protocols actually. So actually there is Puffer.fi, and also Stader also launched their own Kelp DAO. On And Keltao, right? there is, yeah. So this have got a lot of TVLs. Like I think Puffer.fi just crossed 300 million TVL in just a few days.
And I think most of this hype is around, just because of the airdrop that Eigenlayer is going to give, and all Eigenlayer those is going to give. protocols. Yeah, and all those protocols are also saying like, okay, if you restake the ETH or ST ETH with us, then you'll get some points from our end as well as the Eigenlayer points. So it's like 2x of the airdrop that they're gonna get. So that's why mostly people are doing it. But I don't know, like after the airdrop seasons are done, how much people are क्या होने gonna वाला है? put. Yes, नहीं, just because if you airdrops have seen. airdrops Yeah. airdrops is essentially free money अगर आप वैसे सोचते हो, but it's actually not free money because you are putting your research, you are putting your time, you are putting your effort to do this. तो अगर आप समझ लो कि टेक guy ho and you are researching wallets, protocols, L2s, then it's a normal day for you. But अगर आप जॉब कर रहे हो and जॉब के साथ साथ ये कर रहे हो, so that's like a second job for you. So don't Right. think it's free because here you are spending your time and your resource to understand more about the protocol and trying to get. But of course, it does pay off. Like people get hundreds of thousands to even few hundreds of thousands of dollars on airdrops and even multiple airdrops using different wallets. So that's a thing. But आप generally compete कर रहे हो professional airdrop hunters and against bots who are doing uh, this airdrop hunting on a professional level. Right. So that's always a risk कि आपको कितना allocation मिलने वाला है. तो चलिए इसके साथ साथ हम लोग चलते हैं अभी C5 स्पेस में. तो डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म फाल्कन एक्स सिंगापुर में Expand एस्टैब्लिश होने करे. वाले हैं या Yeah. एक्सपैंड करने वाला है. आई थिंक दे वर ऑलरेडी एस्टैब्लिश, दे आर एक्सपैंडिंग देयर ओटीसी ट्रेडिंग. सिंगापुर में लाइसेंस मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है. आई थिंक दैट इज व्हाट स्टॉप देम टिल नाउ. सो वंस अगेन जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा है कि लास्ट 5 साल जो था वो था अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस, डीफाई, इनका एरा. अभी अगले 4-5 साल जो आने वाला है दैट विल बी मोर फॉर regulated exchanges, OTC DEX, etc. And Falconex is also going in that route. They are setting up a presence in Singapore, getting the required licenses, and then doing OTC from Singapore. So that's playing to the strength of whatever they had right now. तो और एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में वो है कि अगर आप हिस्ट्री देखते हो ट्रेडिंग का, तो 10 साल पहले या 12 साल पहले नैस्डैक में almost 70% of the volume was being traded on the stocks, equities, right? Abhi it's like 50-50. 50% is on Nasdaq, 50% is on OTC DEX. तो इंडिया में वैसे स्टॉक्स के लिए OTC DEX तो है नहीं, जैसे यूएस में है, जैसे सिटाडेल सिक्योरिटीज हो गया एक्सेट्रा. पर इंडिया में नॉर्मल OTC DEX है. एंड क्रिप्टो में भी यही फिनोमेनन हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले जैसे पीपल वर यूजिंग बाइनेंस एज देयर एग्जीक्यूशन वेन्यू, और अभी वहां से मूव होके ओटीसी प्लेटफॉर्म पे मूव हो रहा है. जैसे हम लोग का पार्टनर है फाइनरी मार्केट्स, दे आर वन ऑफ द बिगर वन, तो दे आर यूजिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू ब्रिंग B2B ट्रेडिंग वाया OTC मेथड इलेक्ट्रॉनिकली. So this is something which we will see moving forward, क्योंकि जब भी more and more regulated players will come, they will only want to trade with other regulated players. They don't want to trade with non-regulated. So OTC space is only going to go bigger and bigger. And with this thought, we have started our own OTC DEX. Let's see how it performs. But moving on. So this one is a Gnosis card. I think ये काफी interesting है. There are multiple such cards which are coming up on this theory कि अगर आप खरीद रहे हो कार्ड को, you are passing the KYC, KYB, and you can top up your crypto and you can spend in US dollar denominated or any currency where Visa is accepted. तो एक चीज जो यहाँ पे है वो है कि कार्ड इशू कहाँ से हो रहा है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इसी के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हो तो crypto.com का भी अपना एक कार्ड है, and crypto.com is issuing their card from Singapore. Although if you are not a Singapore citizen, उनको ideally ये कार्ड इशू नहीं करना चाहिए because you are not from Singapore. But वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि you are under the Singapore सिंगापुर रजिस्ट्रेशन, तो आप वहां पे उनको ऑनबोर्ड कर रहे हो and you are
giving them the card, and they are deducting it from the balance, but that is completely centralized. तो वही कॉन्सेप्ट को यूज करके ये कार्ड लॉन्च किया गया है. सो दिस इज कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज. तो आपका केवाईसी केवाईबी कहीं पे भी होता है, इट डजंट मैटर, बिकॉज दे आर ऑनबोर्डिंग यू इन सर्टेन jurisdiction जहां से एक कार्ड इशू किया जा रहा है. And then once that is done, they will send you the card. You can send them the crypto and spend it. So that's it. So instead of centralized play, they are going for a decentralized way, because uh, this will enable more people to just deposit as much as they want to. So you don't have to always keep it pre-funded. So, Sam, what do you think? Do you think this kind of cards will catch up in India, or do you think it's more like people wanting to spend outside India will have this cards usage? आपको क्या लगता है, Sam and Shobhit? आई थिंक इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं. लाइक द इनिशियल मूवमेंट ऑफ द कार्ड्स वाज कि कैशबैक वाले जो कार्ड्स आए थे, जस्ट लाइक गो सैट्स आया था, फिर अभी एंक फाइनेंस आए. सो दैट इज बेसिकली आप अगर उनके थ्रू डेबिट कार्ड जैसा वो यूज होता है, वेर यू टॉप अप विथ योर INR एंड you spend on something and you get the cashback in some form of crypto, majorly Bitcoin या Ethereum और gold? so अगर आप ऐसे, हाँ, गोल्ड एज वेल. सो अगर आप ऐसे कार्ड्स ला रहे हो जहाँ पे यू कैन स्पेंड विथ क्रिप्टो, सो आई थिंक देयर विल बी अ मेजर शिफ्ट वहाँ से, बिकॉज बहुत सारे लोग यूज करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो को, बट इट्स नॉट लाइक सो रेलेवेंट बिकॉज उनको फिर ऑफ रैम्प करना पड़ रहा है, INR बैंक में लेना पड़ रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो हैसल इन इंडिया. सो अगर वो कार्ड्स उनके पास है, दे कैन डायरेक्टली ट्रांजैक्ट एनीवेयर, लाइक ऑन रेस्टोरेंट्स, ऑन शॉपिंग. सो आई थिंक दैट विल मेक देयर लाइफ वेरी इजी. बट अगेन कितना फीस होगा एंड will it be very easy to use, वो देखना पड़ेगा. But other than that, there are many players who are coming in, that's like Genesis Safe, and as well as I think there is a called Cypher Cypher Wallet wallet, who is coming. Cypher wallet, yeah. And there's a blockchain Shobhit, called Nordic, so they आपको क्या are लगता also है? coming up with their card. Yeah. Shavik, you are on mute. You are muted. I'm sorry. मेरे यहाँ पे व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन है, क्योंकि मुझे लगता है कि आरबीआई जो है दे कैन क्रिएट द रोड ब्लॉक्स इन दिस पाथ. क्योंकि यहाँ पे एक तो चीज़ है कि कुछ दिन पहले का अगर हम लोग आरबीआई का स्टैंड देखें तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि क्रिप्टो जो है वो एज ए करेंसी नहीं है. ठीक है, तो वो लोग हमेशा चाहेंगे कि सीबीडीसी को यहाँ पे प्रमोट करना और उसका यूटिलिटी बढ़े, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे. तो फिर उस हिसाब से देखा जाए, जैसे कि सैम कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स में या फिर अलग अलग पीओएस में, पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे हम लोग अगर इस कार्ड का यूज करते हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कत तो आ सकता है, क्योंकि रेगुलेशंस बहुत टाइट होने वाला है. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चैलेंज इंडिया में आ सकता है. मुझे भी शौविक के व्यू से थोड़ा सहमति है. और एक रीजन मैं ये बोलना चाहूंगा इसमें, क्योंकि अगर आप देखते हो इंडिया में ऑलरेडी यूएसडीटी आया ना प्रीमियम में. तो इफ यू सेल यूएसडीटी यू आर गेटिंग 5 6 7 8% हायर. और अगर आप कार्ड के थ्रू पे करते हो यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग इक्विवेलेंट टू यूएस डॉलर, राइट. तो अगर आप समझ लीजिए आपको अगर सैलरी मिलता है 1000 यूएसडीटी and you want to spend, you would rather show it as your income, deposit karo INR mein, and then you can spend the INR, rather than you use a card and then you spend, which is at X amount less, because वो आपको USD INR का forex rate दे रहा है, and then again you have to pay taxes on the income, right. ये वही यूज करेंगे जो गवर्नमेंट को अपना वेल्थ नहीं दिखाना चाहते हैं, या क्रिप्टो को आईएनआर में, क्रिप्टो को फिएट में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं. But at the end of the day, always remember, once you're trying to get the card, you are doing your KYC with the partner. और जिस दिन गवर्नमेंट को ये ऑथराइजेशन मिलता है कि yes, I have Indian users who are using your card, so Visa either give me their documents or I block you. So Visa is going to comply with the government. और वहां पे रोड ब्लॉक आ जाएगा. And then government is going to get all the data anyways. Indian government might be slow, but they are not stupid or foolish, right? They are people who takes time to understand what is happening before they really react. So this is why I would say, before you get such a card and start spending money, think of the consequences later on. क्योंकि अगर आप 5-7% बचाने के लिए ये कार्ड यूज कर रहे हो, या 10% बचाने के लिए ये कार्ड यूज कर रहे हो, it might come back and bite you later. So that is my view. And Souvik ने जैसे कहा कि सीबीडीसी को प्रमोट करने के लिए इंडिया अभी रुपये को
पुश कर रहा है, इंटर बैंकिंग को पुश कर रहा है, यूपीआई को पुश कर रहा है, नॉन इंटरनेट बेस्ड पेमेंट्स को पुश कर रहा है. So all these things is going to play in a narrative जहाँ पे people will not go for this kind of payment because it's already costly. अगर आप वीजा कार्ड मास्टर कार्ड यूज करते हो, आई थिंक दे चार्ज 1.5%. तो अगर 100 रुपया शॉपकीपर को दे रहे हो, दे गेट 98.5 or something. But if you are using UPI or Rupee or etc., they are going to get 100 and 100. तो अगर आप 100 पे कर रहे हो, उनको 100 मिल जाएगा. So in that case of scenario, people might say, okay, fine, government is mandating me, so might as well not accept Visa or Mastercard unless it's of certain value. So I think for this card may not be as popular for India, but may be popular for Indians who are going outside India. Right. Forbes Web3 is now on Metaverse, so I think more of a marketing gimmick than anything else. अभी Web3 का जमाना है, क्रिप्टो बुल मार्केट आने वाला है या आ चुका है, according to whatever you can consider. So Forbes is trying to get on the bandwagon as well. So nothing new. Hopefully, instead of just showing some, JPEGs on Sandbox or Decentraland, they actually start utilizing the system. Then it will be much, I would say, happening to go into a metaverse and interact. क्या लगता है Souvik and Sam? Do you think it's just a gimmick, or it's like really something that Forbes is thinking through? मुझे लगता है यही कि बहती गंगा में ये भी हाथ धोना चाहते हैं. इसमें कोई बुराई नहीं है. बुल मार्केट में हर कोई ऐसा स्टैंड लेते हैं, ऐसा पीआर वगैरह निकलते रहते हैं. बट वही है कि हाँ ठीक है, चलो है तो है, जो है तो वैसे ही है. Sam? So I think this is like more of कि सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ, and they are like कि हाँ अच्छे, मतलब metaverse on the sandbox is like कि मैं अगर अच्छे जगह पे ले रहा हूँ, so maybe they will get a lot of footprints जब अगर sandbox बड़ा होता है, because sandbox is trying to do something just like भारत box, उनका एक initiative है अभी. So वो लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं to make people visit the metaverse and do certain things. So Forbes is also trying to cash in on it, and अभी मतलब अभी just start हो रहा है bull market, so they are trying to get in something so that आगे जाके अगर बढ़ भी रहा है metaverse, so they just get some utility out of it. Right. तो देखते हैं मेटावर्स का जो ये नैरेटिव है वो कब तक रिटर्न आता है. आई थिंक दिस नैरेटिव इज आउट ऑफ सिंक फॉर नाउ एंड इट प्लेज वेल विद एनएफटी नैरेटिव. तो एनएफटी का जो नैरेटिव है वो अभी थोड़ा स्लोली बढ़ रहा है. रिसेंटली फजी पेंगुइन्स फ्लिप्ड, आई थिंक, बोर्ड प्याज. So in terms of dollar value per penguin is to per BAYC. So hopefully, I guess this narrative will be in. But इस narrative को आने में I think it will take another 2-3 years, maybe another 5 years, क्योंकि tech अभी develop नहीं है. So once AR VR techs are there, once decentralized hostings are there, and once graph link etc. develops their APIs well, उसके बाद I think metaverse will again be a hit thing. But it's still a long play. And finally, YC ने अभी request डाला है. So if you are somebody who is building a stable coin, they want you to go and apply. And this shows कि YC is taking crypto seriously nowadays. So इसके साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि life comes to a full circle now. क्योंकि once people start raising from YC for a decentralized stable coin, it comes from the days of ICO where you are raising for an ICO from n number of people to going to a legit accelerator and raising from legit investors for your Web3 project. So this is basically, I think, the development that we are seeing across all spectrum. ETFs happening, Forbes coming in, banks coming in, regulated OTC DEX and PCNs coming and registering themselves in Singapore. तो जो भी दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि अगले 5 साल रेगुलेटेड एक्सचेंजेस, रेगुलेटेड OTC डेक्स, रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स विल बी द थिंग टू गो. एंड इसी के साथ मैं पहले हाफ को कवर करना चाहूंगा. एंड Souvik, it's up to you. But before we jump in, I am
going to say something today, which I generally don't do, is to talk about some project and why I think this project is going to be a killer project. So it's this kind of a project which is either, you know, go big or go home. So either this will be a huge boom or it will be a huge bust. But the project really makes sense. So with this, I think Shavik, up to you. Krish, is it home or is it on the footpath or road? वो पता नहीं है, वो तो टाइम ही बताएगा, पर प्रोजेक्ट ऐसा ही है कि इट मेक सेंस टू मी एंड जो भी नैरेटिव Okay. मैंने अभी तक कवर किया है एंड सेइंग दैट यू नो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस विल गेन, तो सेम थिंग नैरेटिव को फॉलो करता है एंड दिस विल मेक DeFi centralized but non-custodial. So basically it will be, you know, CDeFi. So that's the kind of play they are doing. Yeah, perhaps you would find my YouTube name. That's DCFi. Anyways, Anyways, चलिए. uh, I think सबको दिख रहा है, right? Right. Yeah. Yeah. ओके, तो इस वीक का हम लोग BTC USDT का चार्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लास्ट वीक जब हम और सैम ये वीडियो बना रहे थे, तब मैंने एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे जो चीज़ हो रहा है ना, यहाँ पे जैसे ये वाला कैंडल हो गया, एक डोजी बन गया, फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो काफ़ी आ रहा है धीरे धीरे. तो एक बार जो है ना मार्केट, अगर आप लोग ब्रॉडर व्यू देखें इसका या फिर ब्रॉडर टर्म में आप लोग बोल सकते हो, तो 46-47,000 शॉर्ट टर्म में आने का एक चांस है. ठीक है, 47-46 ये जो एरिया है, यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने का, एक बार रिटेस्ट कर सकता है. एक्चुअली वो हेल्दी करेक्शन रहेगा मार्केट के लिए. अगर वो नहीं करता, यहीं से चला जाता है उड़ के, चिड़िया उड़ करके एकदम ऊपर भाग जाता है. मार्केट इज 40K 50K, एवरीथिंग इज हेल्दी नाउ. बात तो सही है आपका, लेकिन वही है कि इस तरह जैसे यहाँ पे जो रैली दिया है ना, बहुत जल्दी ये ऊपर भाग के गया है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन होना जरूरी है ताकि वो सस्टेन कर पाए मार्केट वहाँ पे, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और स्ट्रांग हो. तो उस हिसाब से वही जोन जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आता है, और फिर उसके बाद सपोर्ट जो वो काफी नीचे है, तो बीच में बहुत सारा, मतलब ये जो है ये एक स्ट्रांग बेस की तरह बना हुआ है. 40,000 से लेके 44,000 45,000 ये एरिया जो है. ठीक है, तो इसके अगर कोई क्योंकि आप ये बता रहे हो कि ये अनहेल्दी ग्रोथ है, तो अनहेल्दी ग्रोथ के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्पाइक को छोड़ देते हो, विच इज फ्रॉम लेट्स से 38 40K टू 50K, इसके पहले कभी भी बिटकॉइन ने स्पाइक बनाया है, कभी भी, it has always gone in sync with number of people searching for Bitcoin on Google, right? लेकिन ये जो स्पाइक बना है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है. People are not searching for Bitcoin or people are not searching for crypto keywords, but फिर भी स्पाइक बन रहा है. एंड ये सिर्फ स्पाइक इसलिए बना है क्योंकि ETF आया है मार्केट में. There is nothing else driving this spike except institutional, you know, demand. एंड इसके साथ ही सबको लगता है, यू नो, इथेरियम ETF will come in May I think, और around May, तो इसीलिए वो भी थोड़ा आगे बढ़ रहा है. एंड suddenly Sam goes ghost. But anyways, this is what I feel कि ये जो spike हुआ है, it's not from retail side, it's mostly from the institutional side of things, right? करेक्ट. तो जैसे कि मैं कह रहा था, तो वो जो जोन है ना 40-44 वाला, ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है. लेकिन यहाँ पे वही है कि 46-47,000 ये एरिया एक बार टेस्ट कर ले तो अच्छा रहेगा मार्केट के लिए. यहाँ पे मनी फ्लो इंडेक्स भी हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे हाई जो है वो लगभग आपका 96-7 यहाँ से टच करके वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है. ये मनी फ्लो इंडेक्स, मतलब मनी फ्लो इंडेक्स यूजुअली क्या होता है, 80 को रेयरली क्रॉस करता है. ठीक है, और उसको बहुत जल्दी से अगर ऊपर की तरफ क्रॉस कर गया ना, तो फिर ये जान लो कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा वहां पे. हो भी वही रहा है. ठीक है, जैसे जैसे कैंडल बन रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग का मैं बात कर रहा हूँ. मैं मासिव सेल ऑफ का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट बुकिंग का बात कर रहा हूँ. एक्चुअली इसलिए है ना कि ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि दिस वन इज मोस्टली इंस्टीट्यूशनल डिमांड.
तो अभी कोई भी सेल कर रहा है ना, तो आई थिंक दिस इज प्योरली प्लेइंग इनटू देयर नैरेटिव कि भाई बहुत हो गया है, अब सेल करो, इट विल अभी कम थोड़ा बैक सा टू प्रॉफिट सर्टेन घर लेके लेवल. जाते हैं, वही हो गया। Yeah, and then probably they are not going to get back BTC at this price for the next year. तो यहाँ पे एक्चुअली जो लोग रैली मिस कर चुके हैं 25 30 40 35 40 3 2 इस जोन के आसपास, उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, जब थोड़ा सा करेक्शन हो जाए यहाँ पे हेल्दी, तब वहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते हो। आई थिंक उनको वेट करना चाहिए और थोड़ा 100 के आने चाहिए. And जब लोग बोलने लगेंगे कि बिटकॉइन के बारे में कि क्या बिटकॉइन कैसे लिया जाए, तब लेना चाहिए. अभी लेके तो कोई फायदा नहीं है, वैसे भी बहुत कॉस्टली हो गया बिटकॉइन. क्या लगता है साहब आपको? राइट, फिर से अच्छा बिटकॉइन सर, सही है, आने दीजिए. मुझे भी वैसे ही लगता है कि अभी बिटकॉइन बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया है, तो इट्स लाइक ऑलरेडी 40K, तो अब कितना ही ऊपर जाएगा, सो लेट्स कम बैक टू लाइक 10K, तब खरीदेंगे. बट वो जब 100 के भागेगा तब मेरे 10K. को लगता है फिर से एक रैली आएगा. हाँ, तो जैसे आप वही बहुत करते लोगों ने लगता है. बोला कि जब 16K के आसपास था कि 10 के आने वाला है, 8 के आने वाला है, 6 के आने वाला है, मैंने पता मैंने नहीं उस टाइम पे वीडियो में बताया था, काफी बार बताया था कि बहुत सारे ऐसे ही वेट करके बैठे हुए हैं कि अभी 3 क्या आएगा, 5 क्या आएगा, 10 क्या आएगा। आप लोग, एक जोन होता है, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा लाइन नहीं होता है कि इस लाइन को टच करके चला जाएगा एकदम मौत को ऐसे टक करके छू के वापस आ गया, इस तरह से नहीं नहीं होता है। तो वही है कि एक जोन के अंदर जब आता है तभी आपको धीरे धीरे करके, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि धीरे धीरे करके, ये नहीं कि एक बार में पूरा ऑल इन हो जाओ, क्योंकि हो सकता है वहां से 2-3 हजार 5 हजार पॉइंट और नीचे चला जाए। तो फिर धीरे धीरे करने से क्या होगा, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आपका एवरेज प्राइस बन के आएगा। अगर किसी का एवरेज प्राइस 40K के नीचे है तो काफी अच्छा पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो वहां पे, राइट। तो वो तो ये चीज किस्मत है के ऊपर है. बीटीसी। अगर वो वेट कर रहे थे कि 16,000 से 10,000 जाएगा, एंड दे केप्ट वेटिंग एंड इट वेंट अप टू 50K, नाउ दे आर अगेन वेटिंग कि 40 के नीचे आ जाए फिर खरीदेंगे. तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ और क्राउड विल ऑलवेज बी केप्ट वेटिंग, मैं एटलीस्ट इस एक मार्केट चीज में. और यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोग ना थोड़ा बहुत इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि ये जो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग है कब आ सकता है। आप लोग यूएस मार्केट में जाके उसका टेक स्टॉक को देखो। इनवीडिया का स्टॉक जैसे कि प्रॉफिट दिया है तो काफी जंप आया है वहां पे, लेकिन अभी इससे शॉर्ट पहले करना जो चाहिए, नैरेटिव था इनवीडिया का, तो अभी वहां पे एनवीडिया शॉर्ट देखना करना कि चाहिए क्योंकि एनवीडिया बहुत ऊपर चला गया हाँ, है. तो वहां पे जब थोड़ा बहुत फॉल आता है ना, एक मेजर सा फॉल आप मान सकते हो, तब आप देखना कि होता क्या है, मार्केट से पैसा बेसिकली बाहर निकलता है, तो थोड़ा निकलता बहुत निकलता है क्रिप्टो मार्केट से। रोटेट होता है. तो वो जो जब होगा तो वही पॉइंट होगा, राइट पॉइंट आपको एंट्री, जो अभी तक नहीं ले चुके हैं या आप सोच रहे हैं कि 10K 30K आ गया, वो सब उस पॉइंट पे जाके एंट्री ले सकते हैं। ये हो गया चलिए, बीटीसी। अब इथेरियम के बारे में इथेरियम थोड़ा का भी बता दें. से इथेरियम का भी इथेरियम का सेम ही सेम ही है। है, इथेरियम का बट भी देखिए, मुझे लगता ये है जो कि इथेरियम एक्चुअली का जो नैरेटिव है वो अभी आने वाला है, क्योंकि इथेरियम ईटीएफ अभी आया नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग प्रेशर नहीं है ईटीएफ में, मतलब इथेरियम में. तो जो अगर मैं एक्चुअली मई जून तक आ जाता है, तो आई थिंक बुल मार्केट विल बी रियली गुड फॉर इथेरियम होल्डर्स आल्सो, क्योंकि अभी सिर्फ बीटीसी बढ़ा है एंड सम अदर ऑल्ट. इथेरियम उतना नहीं बढ़ा है जितना बीटीसी बढ़ा है. इनफैक्ट इथेरियम हैज गॉन वीकर अगेंस्ट बीटीसी. तो now I think Ethereum's position will also get stronger with eigenlayer, restaking, and Right. all the L2s that are coming operational and all the DeFi projects that will start launching. So Ethereum will become more and more decentralized, and more and more it will work as really the Swift network of crypto, जो कि उसका नैरेटिव था इनिशियल डेज में. बाद में तो बहुत कुछ नैरेटिव चेंज हुआ, बट इनिशियल डेज में वैसा उसका नैरेटिव. तो जब तक ये न्यूज़ मार्केट में है ना कि इथेरियम का ईटीएफ आ रहा है, आने वाला है, यहाँ से अप्रूवल नहीं, आएगा, इधर ये होगा, वो as I होगा, said ये before, जब बिटकॉइन के तक बारे में ये माहौल इट्स है, अ मैटर ऑफ तब व्हेन. तक आप इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन. मैं भी यही बोलता हूँ, इट्स अ मैटर ये ऑफ व्हेन. अभी नहीं भी नहीं, बोलता हूँ मैं ये क्योंकि बोल रहा हूँ कि ये जब तक हो रहा है ना तब तक आप उसमें लगाते जाओ बस वही मैं क्योंकि बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा बिटकॉइन कुछ। और इथेरियम दोनों को एसेट के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, राइट, इन यूएस. हम्म इट इज नॉट ट्रीटेड एज एनीथिंग एल्स. So those are sufficiently decentralized, and US government ने उसको बोल दिया कि like these are decentralized assets or virtual assets. So for that reason I feel कि बिटकॉइन का आ गया है तो इथेरियम का भी आ ही जाएगा. And once that happens, तो people who आपको had क्या made लगता है, ये profit, जो 3,000 अभी देख रहे हैं हम लोग इथेरियम, ये 30K जा सकता है? I don't think so इस साइकिल में जाएगा, but maybe in our lifetime we might see it someday. But हाँ, I think 3,000 से
2x 3x 10,000 might be a possibility in this cycle. Yeah. तो चलिए इसके साथ हम लोग चलते हैं बाकी न्यूज में. So one of my favorite projects did a airdrop Starknet, and it already I think went down like 40% or something like that. बहुत बहुत नीचे गिरा है. I think And it's इसका गिरने का from his all-time high, it's 75%. 75% whatever. तो मैंने वो देखा नहीं है ऐसे, तो it's 75% down. तो आई थिंक इट हैज इवन पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन फर्दर, क्योंकि अभी जो डंप कर रहे हैं बेसिकली दे आर एयर ड्रॉप हंटर्स एंड उनको पैसा मिला है एंड दे आर जस्ट सेलिंग एट व्हाटएवर प्राइस सो दैट दे कैन पुट दिस मनी इन सम डिजेंट टोकन्स, you know, like meme coins and some new narrative, new tokens, etc. तो प्राइसिंग काफी नीचे जाने वाला है. और एक रीजन इसका प्राइस नीचे आने में बिकॉज आई थिंक ओनली 7-8% or 10%, less than 10% of the token is totally given out, right? So 10% of the less than 10% of the total token is in market circulation. तो जैसे जैसे टोकन अनलॉक होते रहेंगे बाद में आस्ते आस्ते, तो प्राइसिंग थोड़ा स्टेबलाइज होगा. बट क्योंकि अभी बहुत कम टोकन्स है रियली इन सर्कुलेशन, तो एनीबडी कैन मैनिपुलेट दिस प्राइस. So that's what is happening right now. So it's a ये तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, राइट? या तो जो Last भी week, I जिसको भी think. मिला है एयर ड्रॉप, so they are selling it, right? तो शायद 2.7 2.6 ऐसा कुछ था इसका बट प्राइस. मुझे 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 लगता है ना कि एक टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से मुझे लगता है कि 50% करेक्शन जब तक नहीं आता है ना तब तक वेट कर जाना चाहिए. या तो 50% हो गया करेक्शन ना, है, 70% यहाँ से स्टार्ट हुआ 3.55, अभी ये 1.85, तो ऑलमोस्ट 50% तो हो ही गया, 70% के ऊपर हो गया इनका. तो यहाँ से ये सब यहाँ चीज से जो है अब ना कितना काफी ही रिस्की गिरेगा, होता जीरो है, थोड़ी क्योंकि जाएगा. अगर डंप चलता ही रहा है फिर इंटरेस्ट नहीं इंस्टीट्यूशंस का नहीं आया एक्चुअली इधर. एक्चुअली स्टार्कनेट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स व्हिच आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसका जो टेक है बाकी L2 से काफी स्ट्रांग है, and people behind them are not from the crypto background, they are more from the EVM side of the thing, right? तो उनके इसलिए मुझे लगता है कि like compared to other EVMs which are currently the ruling class, which is let's say you know Arbitrum, Optimism, Matic, this one is an incumbent and this is like a big competitor कि वो top 3 में जाए. And I hope that ये top 5 में तो इसी cycle में चले जाए. So this is a very good project, especially because of their whole team, which is Israeli based mostly, and their whole project is super. So जैसे आपको पता है DYDX भी पहले भी Starknet यूज कर रहा था. After that they went to Cosmos. तो IMX जो है, जो immutable X, they are also using Starknet you know base layer. जैसे OP का base layer, Arbitrum का base layer है. तो IMX is also using Starknet base layer. तो Starknet project जो है काफी strong project. तो प्राइसिंग के मामले में अभी तो जो डंप हो रहा है that is mainly retailers selling and then market makers buying at whatever sweet like floor price they are getting. That's I think there is another thing, Krish, that Nether Minds is also selling. So there is a lot of sell pressure from Nether Minds there's as a well. lot of sell pressure. Yeah. तो इसके साथ जस्टिन सन रिमूव्ड अराउंड $500 billion of liquidity from DeFi and put it into one of his projects. Exchanges, HTX. Let's call it a project. Justin Sun has many projects. तो उस exchange के बारे में ऐसे कहा जाता है कि you know it was hacked and people got robbed. And Justin is basically putting in the money so that he can show that they have enough capital. And why this is important now? क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं, then people are going to sue him all over the world, and he will not be able to travel freely and enjoy his life. So, in order not to get into a security nightmare and trouble, he is trying to make the end users whole. And is a clever ploy because अगर वो यहाँ पे पैसे डाल के he takes a long position with a multiple leverage, he can make his money back in no time, right? Because bull market is already bad, there's enough liquidity, so he is trying to do the right thing. But once again, if you have been on the opposite end of Justin Sun's projects, better do your due diligence because I think Sam and CC के बाद इन्हीं का नंबर आने वाला है. रॉन का क्या होगा फिर?
Tron is now part of the Tron Foundation, right? उसका पीछे एक फाउंडेशन है जो उसको रन कर रहा है. So it's not 100% owned by Justin Sun. But then again ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको फोन कॉल करके ब्लॉकचेन बंद किया जा सकता है. So it might be also one kind of that project. So I'm not saying anything beyond that, but let's move to something else, less controversial. So अभी जो है ये फिक्स फ्लोट, they have recently said कि they have been hacked and funds have been stolen. तो यहाँ से let's do a thing. Sam Sovic, क्या लगता है फंड्स रिटर्न आएंगे, और अगर रिटर्न आएंगे तो कितने दिन में रिटर्न आएंगे, और नहीं आएंगे I तो क्यों don't नहीं think आएंगे? so. It will. I don't think so because fixed float जो है वो एक coin mixer था, so it's like not on the regulatory side of things, like exchanges, yeah, So and around it's 25 million, 26 million is hacked, mostly in Bitcoin and Ethereums. So वो कोई suspicious address में लेके hacker निकाल ले. So I don't think that it will be coming back anytime soon, and they can't go on the regulatory route कि USDT को या किसी को बोल के they just stop it. I think it will flow into DeFi, and maybe just like fixed float, they will use another coin mixer to get it out. सौविक आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, मेरे पास एग्जांपल है वॉल्ट का, और मुझे कुछ नहीं लगता है. जिसको जिसको पता है ऑलरेडी, इवन दो द सिनेरियोस आर डिफरेंट, दे आर वर्किंग रियली हार्ड, और हर एक केस के बारे में इन्फॉर्म करना इन्वेस्टर्स को और जो क्रिएटर्स है उनको. बट वन एग्जांपल इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, तो इसलिए मुझे नहीं लगता. तो मुझे लगता है कि इनसे इनका जो हैक है इससे मेजॉरिटी पैसे रिटर्न आ जाएंगे. रीजन इज क्योंकि इथेरियम बिटकॉइन में पैसा मूव हुआ है, सो इट्स एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट टू मॉनिटर इथेरियम बिटकॉइन. एंड अगर वो दूसरे मिक्सर्स में जाते हैं या दूसरे वॉलेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नो मैटर व्हाट, अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है या आर्थम इंटेलिजेंस है जहाँ पे यू कैन डॉक्स, एंड तब तक हैकर्स बात नहीं करेंगे जब तक उनको डॉक्स नहीं किया जाएगा, या जब तक उनको डॉक्स का डर नहीं रहता है. Once they are doxed, this 37 million is going to vanish anytime, because then everybody knows who they are, where they live, what they do. तो जब तक उनका आईडी लीक होने के करीब नहीं होता है, तब तक वो ट्राई करेंगे कि पैसा मूव हो जाए या कन्वर्ट हो जाए या डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. बट करंट AML पॉलिसीज और डिफरेंट एक्सचेंज जिस तरीके से कोलैबोरेट करते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, मुझे नहीं लगता है इट्स इजी फॉर द हैकर टू मूव 25-50 मिलियन व्हाटएवर हैज so easily. तो कुछ दिन बाद ऐसा रिपोर्ट आएगा कि द हैकर हैज compromised and returned 90% or 80% or 95% of the fund, and he has taken a bounty and he has become a security advisor. So this is probably the ending that is what we have seen before, and that is what I predict for this. But आगे चल के हम लोग देख सकते हैं सैम का प्रेडिक्शन या मेरा प्रेडिक्शन कौन सा सही होता है. With this, तो आई थिंक दिस वन इज अ प्रोजेक्ट जो कि पॉलीगन ने शायद इन्वेस्ट किया इसमें along with Polygon Labs and which is similar to Polygon Lab, which is similar to Web3, which is similar to this one, the WorldCoin project. So Sam, I think you have more knowledge on this than me. I have just read it once, so आप थोड़ा बता दीजिए कि क्या क्या हो रहा है, और हम लोग इसके आगे सोच सकते हैं कि हम लोग भी क्या कर सकते हैं इसके. मतलब raising funds has become a joke, so let's say आप थोड़ा बता दीजिए आइडिया, फिर हम लोग अपना आइडिया शेयर करते हैं. So basically it's nothing like just इन्होंने बोल रहा है कि जो पहले हम लोग वर्ल्ड कॉइन में देखे कि आप आईरिस स्कैन करते हो, सो इन चाइना एंड अदर प्रोविंसेस आपको दिक्कत हुआ है, सो नाउ दे आर सेइंग इज लाइक आप अपना पाम, जैसे हम लोग पहले करते थे फिंगरप्रिंट्स इन इंडिया, सो दे आर सेइंग लाइक पाम रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आएगा वेयर you have to scan your palm, and that can be done through your mobile and all. So once you do it, so you can verify in Web3 that you are a legit human and you are not a bot. So it's like a verification purpose for a human, nothing else. So now you can tell Krish like what is the next protocol you are launching. तो अभी जो है, जैसे आपको पता है आइरिस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर, तो ऐसे फिंगरप्रिंट और पाम प्रिंट ऐसे यूनिक आइडेंटिफायर है. तो ह्यूमन बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे यूनिक आइडेंटिफायर है, जैसे हम लोग का कान है वो भी एक यूनिक आइडेंटिफायर है. तो अगला प्रोटोकॉल ईयर प्रोटोकॉल हो सकता है.
जहाँ पे हम लोग कान को ऐसे स्कैन करके डाल सकते हैं, एंड वी कैन पे यूजिंग स्कैनिंग आवर ईयर्स, एंड मे बी वी कैन रेज अ फ्यू मिलियन डॉलर्स विद दिस, क्या लगता है? Yes, sure. Year pay. Ear pay, right? Like you can just put your ears and you can just do the payments. So बट anyways, ये लाने का uh, रीजन क्यों है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऑलरेडी जब आइरिस स्कैनर है तब पाम नहीं नहीं, स्कैनर, आइरिस ईयर स्कैनर, आइरिस में क्या होता है, मे बी आइरिस में डीएनए क्या होता है, स्कैनर और समथिंग एल्स क्या, मतलब कुछ आइरिस में क्या वैल्यू होता है, एडिशन क्या हो रहा आइरिस है? में चाइना में आइरिस इज लिंक्ड विद ऑल योर पेमेंट सिस्टम, राइट? तो अगर कोई आपका हैक कर लेता है आइरिस, देन बेसिकली दे हैव कंट्रोल ओवर ऑल योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऑल योर फाइनेंशियल एसेट्स इन चाइना। अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने उसको मिटिगेट करने के लिए आई को यूज नहीं करके हैंड को यूज कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज नॉट लिंक्ड विद ऑल योर फाइनेंशियल पेमेंट्स। तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर पाम के थ्रू आप फिंगरप्रिंट ले सकते हो, राइट, पाम स्कैनर के थ्रू, क्योंकि वही फिंगरप्रिंट जो है करेक्ट, वही पोर्शन है पाम स्कैन का। करेक्ट, तो करेक्ट। फिंगरप्रिंट से तो हर बैंक का एप्स जो है वो अनलॉक होता है, राइट? तो फिर कहाँ गया सिक्योरिटी? अब वही देखने लायक है कि इसके बाद कौन सा आने वाला है। लाइक एज आई सेड, राइट, आईज आर डन, देन पाम, देन प्रोबेबली ईयर पे द नेक्स्ट वन। तो चलिए, इसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देयर इज अ प्रोजेक्ट जो मैं काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, एंड इसका प्रोजेक्ट का सेंस होता है क्योंकि एज यू नो दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज एंड आई वाज देयर हेड ऑफ पार्टनरशिप। तो मैंने काफी केवाईसी, एएमएल, ऑन चेन चेक्स एक्सेट्रा, ये सब बारे में ये सब वेंडर्स को मैंने क्लोजली स्टडी किया था। तो आई फाउंड कि सब वेंडर्स कहीं ना कहीं शॉर्ट आते हैं कभी कभी। तो यू नीड मल्टीपल केवाईसी वेंडर्स, यू नीड मल्टीपल एएमएल वेंडर्स टू कवर अप द वल्नरेबिलिटी। तो अभी जो भी कोई नया डिफाई प्रोटोकॉल लॉन्च होता है, वो कैसे करके टीबीएल लाता है? वो लाता है कि अच्छा ठीक है, डिफाई प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ एंड यू डिपॉजिट दिस मच एंड वी विल गिव यू दिस मच एपीआई। दैट इज हाउ दे ब्रिंग देयर टीबीएल। बट that TVL is not real TVL because they are giving it from their own treasury. किंटो क्या कर रहा है? किंटो बोल रहा है कि by using their layer 2 finance, which is basically you can choose which KYC provider you will do the KYC, and then it will be linked to your account with your let's say wallet ID. So जैसे soul bound token होता है, you cannot transfer this NFT. This is your on chain ID, for example. But it's not just ID. Whenever you are interacting with this wallet with anything else, they are keeping a track using AML monitoring, using verify VAS or this kind of, for example, uh, ट्रैवल रूल कंप्लायंस सॉल्यूशन। तो इससे क्या होगा कि कोई भी आरडब्ल्यूएस स्पेस में कोई प्रोटोकॉल या डिफाई प्रोटोकॉल लॉन्च कर रहा है, फॉर गेटिंग इंस्टीट्यूशनल फंड्स दे डोंट हैव टू क्रिएट देयर और डू देयर ओन केवाईसी केवाईबी। वो फंड्स को या वो इंडिविजुअल्स को बोलेंगे गो एंड डू इट ऑन किंटो, वी एक्सेप्ट किंटोज आईडी एंड यू कैन कम एंड इंटरैक्ट। एंड इफ यू डू एनी बैड ट्रांजैक्शन, we can always ask Kinto for a vote. If it is really bad, we can dox you. So this is the idea. तो इससे क्या होगा, जैसे शौविक सैम में अगर हम लोग जाते किंटो पे अपना आईडी वेरीफाई कर लेते हैं, तो विद आवर आईडी एंड विद आवर वॉलेट वी कैन साइन अ ट्रांजैक्शन, एंड हम लोग कोई भी प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं, एंड एनी सेंट्रलाइज्ड एक्टिवेटेड इन्वेस्टर्स या फिर अदर people who have done their also KYB KYC can interact with us freely. So if I say I don't want to interact with any US people or Japanese people or South Korean people or North Korean people, so I have the ability to basically filter all these. तो इस ये प्रोटोकॉल वही एनेबल करता है। एंड जैसे आपको पता है कि दिस प्रोटोकॉल इज प्रोबेबली नॉट गोइंग टू मेक मनी इन द बिगिनिंग बिकॉज ये केवाईसी के ऊपर उनका खुद का पैसा बहुत जाने वाला है। बट व्हाट दे आर बेटिंग इनटू कि जो भी आरडब्ल्यूएस पे काम कर रहा है, दे माइट वर्क विद देम लाइक Fondo फाइनेंस, लाइक Zor, लाइक Blue Jay फाइनेंस, ऑल दीज आर लाइक ऑन चेन। जैसे इंडिया में भी राइजर है, तो दीज आर ऑल आरडब्ल्यूएस which is trying to bring investment on chain, and they don't have to do the KYC KYB compliance. They can just work with Kinto and do it. So it's a huge project if it works, right? Now, Yeah, where is the once the problem? institution starts using their API, I think they'll start making the revenue.
करेक्ट। तो ये तो हो गया इसका पॉजिटिव। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि अगर वो लेट, मतलब उनका टोटल बिजनेस मॉडल है, अगर दे हैव एनफ नेटवर्क इफेक्ट, अगर बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, सो लेट्स से शौविक, मी, यू आर यूजिंग इट multiple times to verify in, let's say, Maple Finance, Ondo, BlueJay, etc. So whenever some transaction gets verified, certain amount of the transaction fee goes to Kinto. But if the transaction fee doesn't grow so big, which is what I fear might happen, then they might not be very profitable, right? तो इसीलिए दिस ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इट मेक्स टोटल सेंस, टाइमिंग इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि सेंट्रलाइज स्पेस में people are going to come into DeFi, so now they can interact with only KYC, KYB users. So C DeFi is exactly what they are going to play into. So this is why I think we should keep a watch at it, and hopefully, start using it, because this might become potentially pretty big in the future. So that's it, Sam and Shovik. आपको क्या लगता है? Like, I've been talking about this for a while. पहले भी हम लोगों ने बहुत बार ये बोल चुके थे कि like किस तरीके से C DeFi आने वाला है, and how institutions are going to only work with each other. But then Kinto actually comes in and solves the problem. So the tech issue is being solved. So what do you think might happen in future? जैसे कि मैंने कहा कि इन लोग का एपीआई जब यूज करना स्टार्ट करेंगे इंस्टीट्यूशंस, तब इन लोग का रेवेन्यू चाहे वो बढ़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना केवाईसी और केवाईबी, ये इस इशू को सॉल्व करने के लिए आरडब्ल्यू स्पेस में, डिफाई स्पेस में एक प्लेयर चाहिए था। और मतलब एंट्री जिस पॉइंट पे लिए हैं स्पेशली, हाँ, न्यूट्रल प्लेयर, वो रेनॉन प्लेयर चाहिए था। हाँ, तो इसीलिए पोटेंशियल तो मतलब है काफी इसमें। सैम, what do you think, Sam? व्हाट्स योर टेक? So I think this is like a very good step जहाँ पे just like you guys said कि RWAs and उस पे काम होगा. I think like जैसे कि हर एक Web3 प्रोटोकॉल भी चाहता है like there can be various steps of verification of the KYC. जैसे for airdrops there are people who do Galaxy NFTs होते हैं, फिर Correct. Gitcoin passports होते हैं. So this is like a basic step where you just prove that you are a human, and then comes some थोड़ा सा ज्यादा स्टेप्स. इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको देना पड़ता है एक्सचेंजेस के लिए, एंड ऑन अ एडवांस स्टेप आप वो वेरिफिकेशन करते हो थ्रू अ फोटो एंड एवरीथिंग. सो But this मे बी basically stops bot hunting also. जैसे bot hunts करते हैं या ना airdrops. So this also blocks राइट that. right. So there can be multiple use cases for this protocol. So let's see what how they integrate and how they So partners so up this is with the other projects. potential alpha for an airdrop also. So note the date, 22nd February 2024 हम लोगों ने ये कहा था, and शायद कभी अगर airdrop हुआ, we might replay this space again. So with this, I think Sure. my part is completed. Hope you enjoyed our discussions, and hopefully अगले week से we can do this particular thing where we can bring in some project and discuss about it. Something which we really like, not really paid or not shilling, but Yeah. something which I think makes sense. Disclaimer, Chris, just provide the disclaimer. This is like this project is not yet live, so I think there is no way to invest in this token or anything. This is still a protocol which is being developed, still in beta, I think. So you can go and play around and hope that they do a airdrop someday, or this really becomes valuable. The NFT really becomes valuable for you. क्योंकि क्या है कि जैसे बहुत दिन पहले जब ट्विटर लॉन्च किया, so you can actually get accounts like sam.com, twitter/sam.com, or shovik.slam.com. Sorry, twitter/shovik.com. So those are very valuable because it shows that you are much earlier than most of the crowd, right? And it sets you apart from the people. So basically, if this becomes valuable, if you go into them now, it will set you apart from the people. Maybe you are a DJ and you are already into it, but maybe you are not. You just came across our website, you don't know what to do, or airdrop hunting or anything. So just go there, follow them, and wait for their next round of KYC verification and stuff, and then you can use that KYC verification and then use that ID
on other chains to see what they really offer. So right now it's totally free. So there's nothing investing or anything. Maybe later on it will become valuable. So that was the idea. And yes, not an investment So I think advice. with There's this, nothing to invest, but still. yeah, Yeah, and people can follow them in Twitter Correct. where they would find the updates and all. right. So I think that's it, guys, for this week. So do check out Kind of Finance and interact with their Discord, maybe their website, and wait for the KYC processes. And maybe if you're lucky, you'll get some airdrops or some alphas from there. So with this, I think we'll wrap the live discussion for today. Thank you for joining in from whichever platform you're watching us. Do make sure to like and follow our page, and also do share this stream with others so that they also get to know about the weekly updates. And yeah, keep joining us for every week around the same time, 7:30 on Thursday, and we'll keep you posted about all the latest developments, alpha, and trading strategies in the Web3 space with Bull Run coming in. So thank you guys for watching, and let's meet next week, same time, same date. Thank you. Bye bye. We'll end the Bye stream bye. right now. Thank you. Bye. Bye.